Hi everyone, welcome back to another video. And today in this video we'll discuss about the chapter that is known as homeostasis. Okay, सो आज हम होम्योस्टैसिस के ऊपर सिर्फ रीडिंग करने वाले हैं. ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन में हम जाएंगे. ओके, सो स्टडी रीडिंग का क्या बेनिफिट होता है वो तो आगे चल करके आपको पता होगा. बाकी हम ये फ्लुएंसी कितना मेंटेन कर पाते हैं और कितना रिवीजन कर पाते हैं. रीडिंग का रिवीजन हो गया मतलब एक चैप्टर को 5 बार, 10 बार, 15 बार, अप टू 10,000 बार, जो कि हमारा एक डायलॉग है. ठीक है, अगर आपको ग्रैंड मास्टर बनना है तो आपको 10,000 एक ही चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा. तो देखते हैं उसका एक तो ड्यूरेशन हम कितना कर पाते हैं एंड कितनी बार उस एक चीज़ को कितनी बार रिपीटेशन कर पाते हैं. दो चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं जो कि इस प्रकार का है. रीडिंग का सिंपली सिद्धांत क्या होता है? रीडिंग का सिंपली सिद्धांत होता है कि रिवीजन रिवीजन कितनी बार हो रहा है, मतलब रिपीटेशन, रिवीजन रिपीटेड करना. ठीक है, तो यहाँ पर मैं सही वर्ड लिख रहा हूँ, रिपीटेशन, रिपीटेड. कोई भी चीज़ को आप कितने बार रिपीटेड कर रहे हो एंड उसका मतलब ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन आप कितने लंबे समय से तक कर रहे हो. लंबे समय तक आजीवन भी कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हो जब तक आप जीवित हो, या फिर 5 साल, या फिर 10 साल, या फिर आप एक दिन 2 दिन. तो इसी से पता चलता है कि आपका रीडिंग कैपेसिटी क्या है. ठीक है, इसी चीज़ से निर्धारित होता है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट इज होम्योस्टैसिस. ओके, इंट्रोडक्शन. French physiologist Claude Bernard in 19th century advocated that the stability of internal environment is the condition for the free and independent life. The organism's ability to keep constant internal environment was termed as homeostasis by Walter Bradford Cannon, an American physiologist in 20th century. Cannon explained the concept of maintenance of consistency in internal environment. The composition of iron, electrolyte, water, etc. varies between the intracellular fluid and extracellular fluid. The extracellular fluid contains more amount of nutrients such as glucose, fatty acid, amino acid, and iron such as sodium chloride, bicarbonate, while while intracellular fluid contains higher amount of potassium, phosphate, magnesium. In order to keep a stable internal environment, there is constant adjustment of chemical composites of extracellular and intracellular content, which is aided by various transport mechanisms. Homeostasis is a state of dynamic equilibrium rather than a constant, unchanging state. Okay, all system of human body participate in maintenance of homeostasis. The physiological well-being of a human body is maintained by a harmonious functional interaction between various systems. Role of various system of body in homeostasis.
First one is your skeletal and muscular system. The skeletal and muscular system is responsible for the movement of the human body. The locomotion of entire body is based on the presence of a bone to which the muscle are attached. Movement are affected by muscles. They help in movement of limbs and locomotion. Locomotion aids in the movement of individual to meet the need of food which provide nutrition to the human body and aids in the homeostasis. Okay. Now what is the role of kidney? So kidney plays a vital role in whole body homeostasis. It maintains the extracellular fluid volume, electrolyte concentration, acid base balance, remove waste product from the blood, and also produce hormone erythropoietin which stimulate red blood cell production, renin which regulate blood pressure, and calcitriol which promote the renal reabsorption of phosphate and intestinal absorption of calcium. Now, cardiovascular system. Heart pumps the blood in circulation and maintains the systemic circulation, and this aids in delivering oxygen and nutrients to the various tissue and organ of the body. Then coming to the respiratory system. Respiratory system. The main respiratory function of lungs is to deliver oxygen to the tissue and remove carbon dioxide from the body. Then coming to the endocrine system, it regulates the metabolism, growth and development, sleep, emotion, mood, sexual function, reproduction, stress response, tissue function, among many other important body function via feedback mechanism. Most of the mechanism of endocrine system are negative feedback. For example, adrenocortical releasing hormone. Okay. सो यहाँ पर उसे लिखना चाहिए था आड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ठीक है, एंड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. Thyrotropin releasing hormone, that is known as TRH, are controlled by negative feedback mechanism. Okay, so this scientist name is your Claude Bernard. इनका जो लाइफ पीरियड था वो 1813 से लेकर के 1878 तक था. एंड वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन, ये अमेरिकन शायद थे, 1871 से लेकर के 1945. दिस मैन वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन. ओके, आई होप होम्योस्टेसिस का आज हमारा वन डे वन पेज वाला जो रूल है कि हम हर दिन एक पेज पढ़ेंगे जो कि कंप्लीट हुआ. ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग.